साइड लेटरल रेजेस के लिए, इसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका बताऊंगा। ये आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा, बहुत इफेक्टिव है। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना। Hi guys, I am Reyansh Ojha and welcome back to my fitness channel. I hope you are fine and doing very well. First start from body warm up. फर्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर प्रेस विथ डम्बल। इसमें हैंड की पोजीशन इस टाइप से रखना है, 90 डिग्री पे रखना है इसको। इसका इसको पुश करना है पूरा। ये पुश किया। जब आप पुश करेंगे तो ब्रीथ आउट करेंगे, जब नीचे लाएंगे इसको ब्रीथ इन करेंगे इस टाइप से। जब इसको आप पुश करेंगे इसको फुल्ली पुश करना है इस टाइप से, सीधा इस टाइप से ले जाना है। कि बहुत सारे लोग देखे मैंने, वो इसको इस टाइप से ले जाते हैं। ये आपको फुल पुश करना है। सेकंड एक्सरसाइज अल्टरनेट शोल्डर प्रेस विथ मशीन। इसमें आपको हैंड की पोजीशन को इस टाइप से रखना है, इस टाइप से इसको बेंड नहीं करना है, इस टाइप से पुश करना है, उस टाइप से रखना है। थर्ड एक्सरसाइज साइड लेटरल रेजेस। अगर आपसे साइड लेटरल रेजेस में इस टाइप से नहीं लगता है, आपको पता ही ना आपके हैंड्स के मूवमेंट को कितना रखना है और एल्बोज को कितना ऊपर लेके जाना है, इस टाइप से आपको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है लगाने में के लिए। इसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका बताऊंगा। ये आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा, बहुत इफेक्टिव है। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना। आपको हैंड्स को इस टाइप से लाना है, देन ये, देन रिलैक्स। फोर्थ एक्सरसाइज भी हम अल्टरनेट साइड लेटरल रेज के ही लगाएंगे। इसमें आपके बॉडी को पोजीशन को इस टाइप से रखना, वॉल से टिक जाना,
और हैंड्स के मूवमेंट को सिर्फ इतना रखना, सीधा स्ट्रेट ले जाना इस टाइप से। इसके बाद हम फिफ्थ एक्सरसाइज लगाएंगे फ्रंट रेस विथ डम्बल्स। मैं आपको लगा कर देता हूँ इसको कैसे लगाते हैं। आपको डम्बल्स को बॉडी से थोड़ा सा दूर रखना है, इसको इस टाइप से रखना, थोड़ा सा दूर चिपका के नहीं रखना लेग से, इसको थोड़ा सा दूर रखना और फिर उसके बाद इसको इस टाइप से रखना, इतना स्ट्रेट ले जाना, इतना ऊपर नहीं ले जाना, इसको सिर्फ इतना स्ट्रेट ले जाना अपने शोल्डर के सीध में इस टाइप से। और थोड़ा सा इसको बैंड करके रखना, आपको पूरा स्ट्रेट नहीं करना, थोड़ा सा बैंड करके रखना इसको। तो जब नीचे लाएंगे तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। सिक्स्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज हम लगाएंगे फ्रंट रेजेस विथ रॉड्स। इसमें आपकी बॉडी को पोजीशन को वही रखना सेम, रॉड को थोड़ा सा लेग से दूर रखना है और इतना ले जाना शोल्डर की सीध। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ उसको कैसे लगा। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।